Hello friend, good morning. Today we are going to do the Hindu news analysis of 3rd July 2021. So these are the articles. First articles are the 4,000 years old settlement found during the excavation in Odisha. Second article is Army inducted DRDO 10-meter bridge system. Third article is unjust green. Fourth article is House panels await states survey on learning losses. Fifth article is in centenary backdoor. Backdoor. This is no hand of peace. Last में हम लोग prelim. We will discuss prelim practice question and lastly main practice questions. So the first article says about the 4,000-year-old settlement found during the excavation of Odisha. Okay, so this can be asked in a prelim and mains in GS paper 1. Okay, under the Indian history and culture history, then Indian culture will cover the salient aspects of the art forms from ancient to modern time. The news है about the archaeological wings Odisha discover a 4,000-year-old settlements and ancient artifacts in Balsor. Okay, Balsor trace the three cultural phase. कौन सा? तो first one is Chalcolithic period that extend from the 2000 to 1000 BC, and then Iron Age that extend from 1000 to 400 BC. Then early historic period that is 400 to 200 BC. Human colonization in India. Two broad period: prehistoric and historic. Prehistoric divided into stone, bronze, and Iron Age. Stone Age divided into the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Neolithic period a settled food producing way of life. Neolithic period में पहली बार like settled food producing way of life start हुआ. ठीक है. Introduction of a copper that is in the Chalcolithic period. Then Neolithic and Chalcolithic period. India. Neolithic period and Chalcolithic period flourished simultaneously 4th to 2nd millennium BC. Millennium BC. Then represent a farming based settled village way of life. Neolithic culture restricted distribution where then Kashmir Valley northern Neolithic का restriction था, मतलब कि कुछ एरिया में ही. Chalcolithic ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड था. ठीक है. न्यूलिथिक पीरियड मेनली कश्मीर वैली में था, नॉर्दर्न विंध्या में था, मिडिल गंगा वैली में था, ईस्टर्न नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न इंडिया में था. ठीक है. Chalcolithic culture wider distribution. Entire Ganga valleys, eastern Rajasthan, Malwa or western MP, some part of the Gujarat, western Maharashtra and northern Vindhya. Difference क्या था? Mainly regarding the distribution pattern, technology, architecture and ceramics.
marked increase in the number of settlement, introduction of copper, bronze tools, weapons and ornaments, etc. Improvements in architecture, introduction of wheel-made pottery, diversifications of wars, decorations of vessels by painted and incensed design. अब न्यूलिथिक एंड चारकोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, तो न्यूलिथिक एंड चारकोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया यहाँ पर मेनली मतलब कि इंटायर गंगेज के प्लेन्स में है या सदर्न प्लेन्स में भी है, ठीक है, सभी जगह। और न्यूलिथिक मतलब कि मेनली कश्मीर में है, तुम्हारा वेस्टर्न इंडिया में है, तुम्हारा ये सब है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है। ओके, देन इंडियाज इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर, जो कि तुम्हारा ऑर्चर्ड कलर पोट्री कल्चर, जो कि इंडो गैंजेटिक डिवाइड्स एंड अपर गैंजेटिक यमुना दोआब, नेम्ड आफ्टर द ceramic type extremely rolled and fragile waste of red orchards, which is easily washed off. First recognized by B.B. Lal in 1951 in a small excavation at Bisoli and राजपुर पारसू यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद अहर कल्चर और बानस कल्चर मेवाड़ रीजन्स ऑफ राजस्थान में, ठीक है, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में अहर कल्चर था, ठीक है। मेवाड़ region of Rajasthan, among the earliest chalcolithic culture of India. Type site Ahar in a district Udaipur, Rajasthan, excavated in 1961-62. फिर खयाता एंड मालवा कल्चर, जो कि वेस्टर्न यूपी, खयाता साइट इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एमपी। मालवा कल्चर मोस्ट predominant chalcolithic culture of central India, मालवा एंड जोरवे कल्चर, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में था। जोरवे important and characteristic chalcolithic culture of Maharashtra extend all over except the coastal strips on the western and Vidarbha regions. Jorah Jorah site is in Ahmednagar district, Gujarat, discovered in 1950, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है तुम्हारा नरहन कल्चर एंड वेरिएंट्स, जो कि नॉर्दर्न विंध्या एंड मिडिल एंड लोअर गंगा वैली में मिलता है, ठीक है, मेनली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्री आयरन फेज chalcolithic periods with the principal ceramic assemblages of a white painted black and red ware. अब इससे रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया न्यूलिथिक पीरियड एंड chalcolithic पीरियड फ्लरिश simultaneously. Yes, it's correct. Then second statement is Neolithic culture has a wider distribution compared to the Chalcolithic. Ulta, Chalcolithic period, Chalcolithic culture has a wider distribution compared to the Neolithic. Third is Ahar, Khyat and Malwas are important Chalcolithic culture of India. बिल्कुल सही है। नरहन भी है एक तरह का, ठीक है। अहर खयात मालवा आर द इम्पोर्टेंट chalcolithic कल्चर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है।
अरहर है तुम्हारा मेवाड़ में, राजस्थान, मालवा तो पता ही है वेस्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। और खयात है तुम्हारा एमपी में, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नरहर है तुम्हारा घग्गर रिवर गोरखपुर में, नरहर। Next article is about next article is about the army inducted a DRDO 10-meter bridge system। और ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, ठीक है। कॉम्बैक्ट सपोर्ट व्हीकल्स है, ठीक है। पर्पस टू assist the military in a rapid deploying tanks and other armor vehicle across the gap type obstacle cross craters, anti-tank ditches, blown bridge, railway cuts, then canals, marshland, river and ravines. Then feature क्या can be moved from one place to another. Compositions, vehicle or tank and foldable metal bridge. Vehicle detached from the bridge once it is placed on the gap to allow the traffic to pass, ठीक है। ऐसा कुछ है ब्रिज, ठीक है। 3 मीटर लॉन्ग है। इसको DRDO ने बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। Some of the features are there। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है 2016 ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आईएनएस अस्त्रधारणी क्या है। तो आईएनएस अस्त्रधारणी तो सबको पता है कि टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, ठीक है। अस्त्रधारणी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल्स। फिर इस पर प्रीलिम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम recently seen in the news। It is indigenously developed radar system of India। radar system नहीं है, ये ब्रिज है तो radar system कैसे हो सकता है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय DRDO बट ये radar system नहीं है। It ensure the faster movement of troops especially in a tough terrain। बिल्कुल सही है। It is the only bridge system of India आर्मी ने और भी बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द अनजस्ट ग्रीन। तो इससे रिलेटेड फिल्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द रीजनल एग्रीमेंट अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ developed and developing countries on India interest, Indian diaspora। बैकग्राउंड क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो कि कोविड-19 पासपोर्ट दे रहा है, जिसको ग्रीन पास भी बोलते हैं, फॉर ऑल द यूरोपियन यूनियन सिटीजन रेसिडेंट्स एंड सम कैटेगरी ऑफ ट्रैवल फ्रॉम द थर्ड कंट्रीज, इफेक्टिव सिंस जुलाई 1st। European Union Digital COVID Certificate Regulations for all European Union citizens who are vaccinated or tested negative or recovered from the COVID-19 recognized by all the European Union 27 member states and Switzerland, Iceland, Norway and लिचेंस्टर्स, ठीक है। वैक्सीन
authorized in a European Union, approved by the European Medical Agency. वैक्सीन कौन कौन सा वैक्सीन? तो कोमिरनेटी वैक्सीन, जॉनसन, स्पाइक वैक्स एंड तुम्हारा वैक्स जेवरिया वैक्सीन, AstraZeneca not eligible for the green passes. Indian vaccine Covaxin and Covaxin and vaccine from the Russia and China not eligible. The Covaxin, India made a version of AstraZeneca. ठीक है, जैब क्लियर्ड बाय द WHO. कोविशील्ड क्लियर कर दिया तो भी नहीं दे रहा. ठीक है. Recently, G7 conference, India criticized COVID-19 vaccine passport discriminatory and disadvantageous to the developing nation. Developing countries lower level of vaccine than the developed country. Example, only 3% of the Indian population are fully vaccinated. Other issues, equitable and affordable access, supply and distribution of safe and effective vaccine, etc. Racism in European Union policies. Take a list of the vaccine only include the vaccine already used by the Europe and North America. तो वे फॉरवर्ड क्या है कि मोर नेशंस मस्ट may go for vaccine passport in the near future. More vaccine programs and the impending third waves. Nations shall come together again against the discriminatory practice. अब इस रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि while the European Union's digital COVID certificate aim to restore the freedom of travel for the public, it is highly discriminatory against the third world country examined. ठीक है. Next article is about the House panel of 8 state survey on learning and losses. इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है. जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर, इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू द एजुकेशन. फिर इसके बाद श्याम प्रभा group of 34 DTH channels telecast a high quality educational programs 24/7 telecast using the GSAT 15 satellite. Channel are uplinked Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformation. Content provided by the NPTEL, NIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS. Web portals maintained by the Information and the Library Network Center. SWAYM, SWAYM, SWAYM. SWAYM is the study web of active learning for young aspiring minds. Young aspiring mind. SWAYM full form is the study web of active learning for young aspiring mind. To achieve the three fundamental principles of education policy: access, equality, and equity and equality. Objective क्या है? To take the best teaching learning resources to all, including disadvantages section. Courses hosted, video lecture, especially
prepared reading materials, self-assessment test, and online discussing forum seeks to bridge the digital divide from the student. National Digital Library of India, virtual repository of learning resources, provide a host to serve for the learner community, filter searching to facilitate focus searching, group specific service and examination preparatory for the school, college students and job aspirant, sponsored and mentored by the Ministry of Education through the National Missions on the Education through the Information and Communication Technology. तो स्वयं एक पोर्टल है जो कि स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरेशन माइंड. ठीक है. तो स्वयं प्रभा एक ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल है, टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स 24/7 टेलीकास्ट होता है, जीसैट 15 सैटेलाइट यूज करता है. ठीक है. तो एक दीक्षा भी पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा, national platforms for school education initiative by National Council for Education Research and Training, developed on the core principle of open architectures, open access, open licensing, diversity and choices. Policies and tools make education ecosystem to participate, contribute and support. Common platforms can be accessed by learners and teachers across the country, support 18 plus language and the various curricula of NCERT, CBSE, state बोर्ड अक्रॉस द इंडिया. ठीक है. तो दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक डायग्राम है, इसको बना सकते हो तुम. टीचिंग एंड लीडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग, लेसन प्लान्स एंड टीचर्स टूल्स, देन एक्सप्लेनेशंस कंटेंट, देन प्रैक्टिस एंड होमवर्क, देन क्वेश्चन बैंक एंड एग्जाम प्रिपरेशन, देन असेसमेंट, देन क्विज. ठीक है. इससे रिलेटेड जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिजिटल एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल येट नॉट completely successful in India. In this context, examining the digital evolutions contributed to the functioning of the education system in India. The next article is about the in-centenary backdoor. This is no hand of peace. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. इंडिया एंड नेबर्स रिलेशनशिप. तो इंडिया चाइना रिलेशन जो कि प्रोग्रेसिव टॉक्स, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स नियर पैंगोंग सॉ लेक एंड कैलाश रेंज, China tactical maneuvers in border regions across the Ladakh, new militia units comprising of local Tibetan youth deployed in eastern Ladakh, high altitude warfare and surveillance, peaceful relationship, peaceful functioning of the world, no proper answer. Why China chose to attack India position in Ladakh. Global concern is what is that national expressions concerns about the threat posed by the China to the existing world orders. G7 and NATO criticized China from
For its military ambitions, China under threat in the aviations, aggressively actions in the south in the eastern China Sea, subjugating the Uyghur Muslim minority. Risks क्या है कि democracy and fairness economic systems of Hong Kong continues tactical maneuvering on Indian border. The reason for the Chinese attack on India's prominent role in Quad grouping, India's significant role in the Indo-Pacific region, China internal turmoil. Internal turmoil, TURMOIL. Past lessons from Mao Tong या Mao Zedong से past lesson क्या है? Ill conceived policies and programs, huge issues हो गया था, जिसका worst famine भी हो गया था, great leaps forward movement भी हो गया था, जिसके कारण Chinese communist third to organize vast populations into the large-scale rural communes, develop labor-intensive method of industrialization, emphasize manpower rather than the machines and capital expenditure, gradually accumulating of capital and purchase of heavy machineries. Internal problem in the Communist Party of the China. Many members were critical of Mao autocracy attitude and ill-conceived policies, attacked India as a diversion and to strengthen his position inside the party. सी जिनपिंग भी सेम चीज कर रहा है एज माओ जेडोंग किया था. Their dominance over the Communist Party of China, trying to consolidate the powers and achieve preeminence, enjoying the Mao Zedong, pushing China to become the superpower by overtaking the US. Chinese military making it the world most powerful military. Issues क्या है कि aspirations of the Xi Jinping are stalling and China and Communist Party of China members questioning his policies and moves. Chinese economic showing sign of slowdowns, जिसके कारण से ये सब किया. कंक्लूजन क्या है कि इंडिया शुड एक्सपेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर मोर सिमिलर सिचुएशन. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं. तो तुम्हारा इन इंडिया न्यूलिथिक पीरियड एंड चैल्कोलिथिक पीरियड बिल्कुल सही है. ठीक है. फिर न्यूलिथिक कल्चर हैव द वाइडर डिसिप्लिन, चैल्कोलिथिक कल्चर का वाइडर आहर जो कि 1950 टू 1700 BC में चला. खयात जो कि तुम्हारा 2450 से 2000 तक में चला. एंड मालवास जो कि 1700 से लेकर 1400 के बीच तक चला. तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो 1 and 3 इज करेक्ट. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2016 से कि INS अष्टधानी क्या है. तो टोरपीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, सी. फिर उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम. तो ये इंडिजीनियसली डेवलप है DRDO के तरफ, ये रेडार नहीं है. फिर इट इज़ ओनली ब्रिज नहीं है, और भी बहुत सारा है. फास्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स स्पेशली इन टफ ट्रेन, बिल्कुल सही है. यानी कि डी हो जाएगा आंसर. ठीक है. तो 1 A हो गया, सी हो गया टोरपीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, एंड डी हो गया.
ठीक है। प्लीज़ लाइक ये मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा कि while European Union digital COVID certificate aim to restore the freedom of the travel from the public for the public, and it's highly discriminatory against the third world countries. Whereas digital education is very useful yet not completely successful in India. In this context, evaluate the digital initiatives, contributions, and to function of the education system in India. Please like, subscribe, and share the video. Thank you.